Good morning student, this is part 5 of the chapter correlation, and in this video we are going to learn how to calculate rank correlation, coefficient of correlation in case ranks are repeated. In the question they are giving the two series x and y, and if you are observing here in the y series 13, the two values are repeated here, and 6 and 6, these two values are repeated. It means here the ranks are repeated. If the ranks are repeated, we have to use the bigger formula. Now first I am going to explain you how you will rank the series. First we will arrange the series in a descending order. As I told you, बड़े से छोटा यहाँ पे करते हैं हम लोग. 65 के सामने देखो फर्स्ट रैंक दी है, 57 के सामने सेकेंड रैंक है, 48 के सामने थर्ड रैंक है, 40 के सामने फोर्थ है बेटा, 33, 55, 26, 6, 16 के सामने सेवेंथ है, 15, 8, 9 के सामने 9. ठीक. Now we will do the ranks for the y series. The highest value is 22, means ry is 1. Next 20, here it is 2. Next is 15, that is 3. Afterwards 14, I have written 4 here. Now 13 and 13, it means 5th rank and 6th rank. Now to calculate the rank of these values, what we will do, we will calculate m1. तो कौन कौन सी रैंक्स यहाँ पे आ रही थी बेटा? 5 and 6. दैट इज़ 5 + 6, क्योंकि 2 ही बार 13 रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2. 11/2, दैट इज़ 5.5. तो देखो 13 के सामने हमने 5.5 लिखा है दोनों के सामने, क्योंकि हम किसको 5th दें किसको 6th दें हमको नहीं पता. नाउ आफ्टर दैट 7th रैंक, उसके बाद क्या है बेटा? 9. तो 9 के सामने हमने 7 लिखा है. When we are observing again, there is a 6. 6 भी 2 बार रिपीट हो रहा है बेटा. It means here हम जो वैल्यूज़ लिखी थी बेटा हमने 7 तक रखी थी. It means हम m2 कैलकुलेट करेंगे. 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2, that is 17/2, 8.5. That is why in front of a 6 we have written 8.5, 8.5. I hope it is clear. Now after calculating rx and ry, same thing we will do. We will calculate d, that is rx minus ry. 3 minus 5.5 is minus 2.5. 5 minus 5.5 is minus 0.5. 4 minus 1 is 3. 9 minus 8.5 is 0.5. 7 minus 4 is 3. 1 minus 2 is minus 1. 6 minus 7 is minus 1. 8 minus 8.5 is minus 0.5. 2 minus 3 is minus 1. Now d square, minus 2.5 का square 6.25. 0 minus 0.5 का square is 0.25. 3 का square is 9. 0.5 का square is 0.25. 3 का square 9. Minus 1 का square 1. Minus 1 का square 1. Minus 0.5 का square 0.25. Minus 1 का square is 1. Now we will total the d square value, that is 28. And here we have calculated m value 2 times. Means when we are going to write the formula, we will write the m values 2 times. You can see here the formula is 1 minus 6 sigma d square plus 1/12 m cube 1 minus m1 bracket close plus 1/12 m cube 2 minus m2 bracket close upon n cube minus n. 1 minus 6 d square का टोटल बेटा 28 था, प्लस 1/12. जब हमने फर्स्ट m1 की वैल्यू निकाली है, we have taken 2 ranks over there, that is why I have written 2 cube minus 2. और सेकेंड m की वैल्यू निकाली है m2 की, तभी हमने 2 ही रैंक्स लिए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 cube minus 2 दोबारा रिपीट किया है, डिवाइडेड बाय 12. नाउ 1 minus 6
ब्रैकेट ओपन 28 1/12, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 - 2 प्लस 1/12 8 - 2 अपॉन 729 - 9, क्योंकि 9 का क्यूब किया तो क्या आया 729. नाउ 1 - 6 ब्रैकेट 28 प्लस 8 - 2 बेटा 6 होता है, 6/12 प्लस 6/12 अपॉन 720. 729 में से 9 को माइनस किया. इट मीन्स 1 - 6 ब्रैकेट ओपन 28 प्लस 0.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 720, दैट इज 1 - 6 इंटू 29 अपॉन 720. 6 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बट वी विल गेट 174. Therefore, the in the next line we will write 1 minus 174 upon 720. 174 को 720 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, we will get 0.24. Therefore 1 minus 0.24, the answer is 0.76. I hope it is clear now how to calculate the rank correlation coefficient when the ranks are repeated. Now student, this is another question in which the ranks are repeated. Calculate the coefficient of correlation from the following data by the Spearman's rank correlation method. X and Y, the two series are given. You can see here in the series, even in the X series the ranks are numbers are repeated, that is 20 20 2 times है, और Y series में भी variables repeat हो रहे हैं बेटा, 9 9 2 times है. Therefore first we will write the series of X and then the series of Y, and after that we will put the ranking over there. Highest value X की series की बेटा 24 है, that is why उसके सामने हमने 1 लिखा है. After that 22, we have written 2 here. 20 repeat हो रहा है 2 times, it means थर्ड और फोर्थ रैंक कंज्यूम हो रही है, इसलिए हमने क्या कैलकुलेट किया, m की वैल्यू 3 + 4 divided by 2, the answer will be 3.5. तो in front of 20 we have written 3.5. आफ्टर दैट फिफ्थ रैंक हमारे पास आएगी, तो 18 के सामने हमने 5 लिखा है और 11 के सामने हमने 6 लिखा है. In the same way we will do the ranking for the Y series also. Highest number 24 है, that is why I have written 1 in front of it. After that 22, that is second. 21, that is third. 20, that is fourth. Now 9 2 times repeat हो रहा है, मतलब फिफ्थ और सिक्स, that is 5 + 6 divided by 2, that is 5.5. You can see here in front of 9 we have written 5.5 5.5. डी कैलकुलेट करेंगे बेटा, आर एक्स में से आर वाई माइनस कर रहे हैं, इन्होंने आर वन माइनस आर टू लिखा है, बोथ आर द सेम थिंग. 3.5 - 1 is 2.5, 6 - 5.5 is 0.5, 1 - 4 is -3, 5 - 2 is 3, 3.5 - 5.5 is -2, 2 - 3 is -1. Now we will do the square of this. d square निकालेंगे, 2.5 का d square, 6.25, 0.5 का 0.25, 5 का 0.25, -3 का 9, 3 का 9, -2 का square is 4, -1 का square is 1. Now we'll total the d square value, that is 29.50. Now first we'll write the formula. R is equals to 1 - 6 sigma d square plus 1/12 m cube minus m plus 1/12 m cube minus m upon n cube minus n. यहाँ पे m 2 बार कैलकुलेट किया है, that is why I have written 2 times here, 1/12 m cube minus m plus 1/12 m cube minus m. Now we'll put the values. 1 - 6 d square का टोटल बेटा 29.50 है, प्लस 1/12 m जो हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट, उसमें 2 रैंक्स लिए हैं, दैट इज़ वाई आई हैव रिटन 2 क्यूब - 2 प्लस 1/12 2 क्यूब - 2, क्योंकि सेकेंड m में भी हमने 2 रैंक्स ली थी जो रिपीट हो रही हैं, अपॉन 6 क्यूब - 6. नाउ 1 - 6 ब्रैकेट ओपन 29.50 प्लस 1/12. 6 कैसे आया बेटा, 2 क्यूब इज 8, 8 - 2 is 6. Here also 2 cube is 8, 8 - 2, that will get 6 here. And 6 का क्यूब करेंगे तो it will get 216. Now 1 - 6 into 29.50 plus 1/2 plus 1/2.
आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आप इसको कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो बेटा. डिवाइडेड बाय 210 and then the next answer will be 1 minus 6 into 30.50 divided by 210. When we will multiply 6 into 30.50, we will get 183. In the next line, 1 minus 183 upon 210. 183 को 210 से डिवाइड कर रहे हैं, but we will get 0.871. 1 minus 0.871, the rank is 0.129. I hope it is clear now how to calculate rank correlation when ranks are repeated. Now it's a time for an assignment. Question number 1, what is correlation? Correlation की definition लिखेंगे बेटा. Question number 2, explain the various degrees of correlation. I had explained you 3 degrees of correlation. You have to write that 3 degrees here. Question number 3, state the properties of rank correlation. Properties लिखेंगे यहाँ पे rank correlation के इस question में बेटा. Question number 4, calculate the coefficient of correlation between price and quantity. In this question, they had not given any method from which we have to solve. It means you have to calculate by Karl Pearson's method. Question number 5, calculate coefficient of correlation from the following data. Here also you will find with the help of a Karl Pearson's coefficient of correlation, and it is your wish, you can use the direct method or a shortcut method in question number 4 and 5. Question number 6, compute coefficient of rank correlation between price and supply from the following data. क्वेश्चन नंबर 6 में ये स्पेसिफाई कर रहा है रैंक कोरिलेशन यूज करना है, तो आप वही यूज करोगे. एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग द सीरीज हियर प्राइस एंड सप्लाई, देयर इज नो वेरिएबल विच इज रिपीटिंग. इट मीन्स यहाँ पे छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन. Question number 7, compute coefficient of rank correlation from the following data. In this question, you can see here the series of x and y. In a x series also, the values are repeated, and in the y series also, the values are repeated. It means you have to use that long formula here. I hope it is clear now how to calculate the rank correlation and Karl Pearson coefficient of correlation. Now, solve these questions in your copies. Thank you, students.